So, in the above video, you have seen the factors affecting friction. One of the factors that affect friction is nature of surface. You have seen when the cell is rolled over the metal surface, it is covering maximum distance. And when it is rolled over wooden surface, it is covering less distance as compared to when it roll over metal surface. And in case of cloth, it is covering least distance. Why? Because when we compare these surface, metal surface is smooth as compared to the wooden one, and the wooden surface is smooth as compared to the cloth surface. So you have seen when the surface is smooth like metal surface, the cell is covering more distance, means maximum distance. Why? Because there is less friction. Okay. And in case of cloth, it is covering least distance. Why? Because the friction is more in that case. फ्रिक्शन जो है वो अपोज करता है मोशन को. In the case of cloth surface, when the cell is rolled over cloth surface, in that case it is covering less distance, or you can say least distance. Why? Because it offers more friction. Okay, so you can say one of the factors that affect friction is nature of surface. So when the surface is smooth, it offers less friction and the object will cover more distance. And if the surface is rough, it will offer more friction and the object will cover less distance. Okay. The second factor is weight. Weight means how hard the surface pressed together. Okay. To understand this, consider an example. Suppose you are supposed to drag a mat lying on the floor. फ्लोर के ऊपर मैट को आपने ड्रैग करना है. Okay. And in second case, if I keep a wooden box, heavy wooden box, or I sit on the carpet, on the mat, in which case it will be easy for you to drag that mat? Obviously, when nobody is sitting there. Why? Because जब उसके ऊपर weight पड़ा, when some weight is over the mat, तो क्या होगा? वो उसको harder press कर देगा. जितना ज्यादा उसको प्रेस करेगा उस केस में उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा and it will be difficult for us to drag that mat. So if the weight is more, the friction will be more. If the weight is less, friction will be less. So you have studied two factors that affect friction. One is nature of surface and second is weight. Okay. So the next topic is causes of friction. Cause of friction. What is the basic cause of friction? Friction आता ही क्यों है? कैसे लगता है friction? We know that suppose a table, there is a table and a book is lying on it. ठीक है? According to you, this table is smooth. Actually, no surface is ideally smooth. कोई surface जो है वो बिल्कुल smooth नहीं होता. The surface which appears to be smooth, obviously उसमें भी irregularities आपकी होंगी ही होंगी. ठीक है? That's why it offers friction. Now this table is appearing to be smooth, but it is not actually smooth. Okay? क्योंकि यहाँ book जो है it is lying on the table and it is at rest. Now friction is acting between this book and this table. अब इन दोनों के surface को if you see, it has many irregularities. Irregularities means hills and valleys, like here. Suppose this is a table surface, इसकी hills and valleys is shown here, and this is book, इसकी भी hills and valleys are shown here. ठीक है? These hills and valleys get interlocked with each other. आपस में interlocked हो जाती हैं. ठीक है? And this causes friction. जो जितना ज्यादा इंटरलॉक होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो उतना स्लाइड या मूव नहीं कर पाएगा. ओके. सो दीज आर द सरफेस इरेगुलरिटीज. ठीक है? मोर इरेगुलरिटीज मीन्स मोर फ्रिक्शन एंड नो सरफेस इज स्मूथ. कोई ऐसा सरफेस नहीं है जो आइडियली आपका स्मूथ हो. ओके. सो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ फ्रिक्शन? दैट द सरफेस they are having irregularities. They get interlocked with each other. Interlock हो जाती है and
a greater force is required to overcome it. Due to these interlocking of these surfaces, friction occurs. और अगर आप इसको मूव कराना चाहते हैं तो you have to apply force. Okay? So now we will study the type of friction, that is static friction and sliding friction. Static friction. Static means rest. Okay? Suppose a box is here on the floor. It is at rest position. ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल. तो इस केस में बॉक्स और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, so you have to apply force to overcome this friction, and the force which you are applying, that is known as static friction. See the definition: the force required to overcome friction. आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करना है. जितना ये फ्रिक्शन बॉक्स जो कि रेस्ट पे है एंड फ्लोर के बीच में लग रहा है, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन so that this object can move. It is at rest. You have to, आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, बॉक्स को मूव कराना है, सो यू हैव टू अप्लाई फोर्स. आपको उतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, एंड द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन at the instant, means at the time when the object starts moving from rest. That friction, that force is known as static friction. Okay, now sliding friction. What do you mean by sliding friction? Sliding friction में क्या होगा? The force required to keep the object moving with the same speed. Suppose this object is moving. This object is मूविंग. अब आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है. सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग. आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करता रहे. सो आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा टू कीप दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड. मूव कर रहा है ऑलरेडी. नाउ यू आर अप्लाइंग फोर्स टू कीप दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड. सो दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, नाउ किस केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है? इन स्टैटिक और इन स्लाइडिंग. ऑब्वियसली इन स्टैटिक फ्रिक्शन में यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आपको थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ रहा है बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी मूविंग एंड यू वांट टू कीप दैट ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड. तो आपको उसको थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा. सो दिस स्लाइडिंग फ्रिक्शन is less than static friction. Okay, so with this I over the class. Please watch the video carefully, okay, and understand the concept, each and every concept. Thank you all and have a nice day.